Welcome back, viewers. You're watching the special presentation of Sansad TV on the G20 summit. And joining us now are very special guests in this edition of the broadcast. Joining us through virtual platform, Mr. Suresh K. Goyal, former ambassador. Welcome, Mr. Goyal. And also joining us, Dr. Sanjeev Kumar, Senior Research Fellow, ICWA. And also joining us through virtual platform, Mr. Richard M. Ross, Senior Advisor and Vadhwani Chair in US-India Policy Studies. I welcome all of you to Sansad TV and thank you so much for joining us. And Ambassador Goyal, let me begin the program with you. The India G20 presidency has been able to arrive at a general consensus on 4 key financial matters, including the Global South in industrial economies growth strategies, restructuring multilateral development banks for inclusive global growth, leveraging digital technology for social development, and exploring the potential of new technology for common good. Let's get into the nitty-gritties of each of them. And first, let's talk about Global South. The Global South refers to countries often characterized as developing, less developed, or underdeveloped, primarily located in Africa, Asia, and Latin America. The World Bank has acknowledged a shift in wealth from North Atlantic to the Asia-Pacific region, challenging conventional notions of economic power distribution. Projections indicate that by 2030, 3 of the 4 largest economies will belong to Global South countries, with China and India leading the way. Your thoughts on the growing economic and political power of the Global South and the implications on global geopolitics? Well, it's a very difficult question, Kriti, if I were to say so, because when you talk about the Global South, in terms of transfer of financial resources from north to south, it's a mantra that I've been hearing about ever since I joined the service in 1978. And everybody agrees that technology, resources, labor, work, investment, etc. have to flow to the south to be able to really make the world, as Michael Jackson said, a better living place, a better place. Therefore, from that point of view, the declaration which has been adopted just in the last couple of hours is a great statement. It's a very aspirational kind of a statement, and particularly from the point of view of Global South, to ensure the inclusive development and growth is superb. My question really in this particular case, and I was just going through the declaration before I came on this channel, I was trying to see basically how we could really make the multilateral financial institutions and the resource-rich countries, developed countries, how could we actually contribute or ensure that the resources can actually go to the developing South? And I found that there was very little in terms of the mechanisms to ensure implementation of all these very, very good statements really. And therefore, what I would say is that the statement or the declaration has hit the nail hard on the head in terms of identifying how the situation should be resolved, who are involved, who should do what. But how do we make them do what they're supposed to be doing? For example, the reform of the multilateral institutions, banking institutions. It says we will need larger, more effective, more efficient institutions. Agreed. But how do we make it happen? So therefore, I would say really here, the declaration is very effective in laying a framework. It is showing a path to the future. How do we make countries walk on this path to the future is yet another matter. And I think that requires another discussion. Kriti. Absolutely, sir. जी बिल्कुल संजीव कुमार जी, अगला सवाल मेरा आपसे है और मैं जानना चाहता हूं क्योंकि फ्यूचर यहां साफ तौर पे लिखा हुआ है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड के वित्तीय स्थिरता बोर्ड के अध्यक्ष क्लॉस नॉट अपने आप में इस वक्त तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और ये बताता है किस प्रकार से। So those are the latest visuals that we are getting from the G20 summit. Manoj ji, of course, we can see Prime Minister Modi there and President Draupadi Murmu there. And we were talking about the declaration and the importance and, of course, the big takeaways today. Over to you, Manoj ji. जी
बिल्कुल, जाहिर तौर पर जो आज का रात्रि भोज का कार्यक्रम है वो भी अपने में खासा एक महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति जी ने रात्रि भोज दिया है जो हमारे मेहमान हैं उनको। साथ ही आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, राष्ट्रपति और अपने विदेशी मेहमानों का स्वागत करते हुए, उनका अभिनंदन करते हुए। जाहिर सी बात है संजीव जी, ये मैं आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि ग्लोबल साउथ की बात काफ़ी हो रही है और ग्लोबल साउथ को लेकर भारत ने जिस प्रकार से अपनी आवाज़ को बुलंद किया है, ग्लोबल साउथ के जो अधिकार हैं, जो हक हैं या जो विकास की अवधारणा है उसको लेकर भारत की, उसको जिस तरह से एक तरह से उसका आवाज़ दी है भारत ने, आप ये मानते हैं कि भारत ग्लोबल साउथ के एक लीडर के रूप में उभर के सामने आया है इस समिट के जरिए? देखिए, भारत ग्लोबल साउथ का स्पोक्स पर्सन मुझे लगता है स्वतंत्रता के बाद से रहा है जी। आप अगर इतिहास में देखें तो नॉन अलाइंड मूवमेंट के तहत हमने ग्लोबल साउथ का सपोर्ट किया। फिर जितने कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट में, इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट में ग्लोबल साउथ कंट्रीज को सपोर्ट किया, तो भारत ने हमेशा ग्लोबल साउथ के कंसर्न्स और एस्पिरेशंस को ध्यान में रखते हुए इंटरनेशनल मंचों पर उसको उठाया है। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि जहां तक G20 के इस न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन का सवाल है, मुझे लगता है कि हाल के समय में हमने ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं देखा है जिसमें कि मैं तो इसे एक हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट मानूंगा ग्लोबल साउथ के पर्सपेक्टिव से। भारत ने सबसे पहले 125 देशों को एक साथ करके उसका एक सम्मेलन किया, वर्चुअल वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, और उसमें से जो कंसर्न्स और जो एस्पिरेशंस भारत पहचान पाया या पूरी दुनिया जो जान पाई, उसको ध्यान में रखते हुए इस डिक्लेरेशन में बहुत सारे नए इनिशिएटिव हैं जो ग्लोबल साउथ के परिप्रेक्ष्य में हैं, ग्लोबल साउथ को ट्रांजिशन में मदद करेंगे। मैं यहाँ एक दो उदाहरण देना चाहूंगा। इस डॉक्यूमेंट में एक और महत्वपूर्ण बात है कि इसमें भारतीय नैरेटिव कहिए या भारत के फुटप्रिंट को दिखाई देता है पूरा का पूरा डिक्लेरेशन में। और मैं एक उदाहरण दूंगा, इसमें डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भारत ने इसके जो फ्रेमवर्क और डिफिनीशन प्रस्तुत किया उसको G20 ने स्वीकार किया। इसमें एक सेफ, सिक्योर, ट्रस्टेड, अकाउंटेबल, इंक्लूसिव डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई है। और यहाँ में प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले दिनों में एक वक्तव्य दिया था कि भारत में चूंकि डाइवर्सिटी है और ये सारे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि एजुकेशन के क्षेत्र में हम दीक्षा को देखते हैं, फिर कोविन हुआ या बाकी सारे पब्लिक डिलीवरी सिस्टम में, चूंकि भारत में विविधता है और ये टेस्ट हो चुका है ये सारे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये दुनिया के किसी भी कोने में भी सफल होंगे बिकॉज दे आर ट्रस्टेड इन इंडियन डाइवर्सिटी। तो ये एक महत्वपूर्ण पहल है भारत के तरफ से और मुझे लगता है कि ग्लोबल साउथ को इन सारे इनिशिएटिव से काफी फायदा होगा। इसी के अलावा जैसे क्लाइमेट चेंज को देखिए, इस पे भी ये बहुत एम्बिशियस और बड़ा ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इसके फाइनेंसिंग से लेके बाकी सारे मुद्दों पर, रिस्पॉन्सिबिलिटी से लेकर और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तक, आई थिंक ये डॉक्यूमेंट हाल के दिनों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टडी होगा इतिहास रिसर्चर के लिए। Absolutely, and viewers, those are stunning visuals on your screen there. Prime Minister Modi, President Draupadi Murmu welcoming the esteemed guests. That's Bharat Mandapam, our architectural marvel, the massive Natraj Murti, and of course, the beautiful, beautiful scene that we are seeing on the screen right now of our own G20 venue, Bharat Mandapam. Of course, makes all of us proud here, Manoj ji. जी बिल्कुल, जिस तरह से सांस्कृतिक उसका प्रदर्शन किया गया है वो दरअसल भारत की वैभवता को दिखाता है कि भारत की जो संस्कृति है वो कितनी भव्य है।
और उसी का ये संदेश भी है। अगर मैं कृति एक बात और कहूं, जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो G20 देशों के मेहमान इस समय भारत में मौजूद है, उनका जिस प्रकार से अभिवादन कर रहे हैं और जो उस अभिवादन में अपनेपन का भाव है, वो अपने में एक संदेश देता है। आप देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री जी एक एक करके मेहमान को राष्ट्रपति जी से मिलवाते हैं, उसमें अपनापन है, पूरा परिचय करवाते हैं। ये कहीं ना कहीं एक अपनेपन का संदेश देता है कि जिस बात पर जोर प्रधानमंत्री जी ने मानवता पर दिया कि दुनिया एक परिवार की तरह है, और जब परिवार की बात भारत करता है, भारत के प्रधानमंत्री करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनके आचरण में, उनके व्यवहार में भी दिखता है। और वो सादगी और वो अपनेपन का भाव वो प्रधानमंत्री के व्यवहार में हमें देखने को मिल रहा है। Absolutely, we are well known for our hospitality, for our warmth, and as we've been saying, Vasudev Kutumbakam, whole earth is one family. But getting back to the discussion, and we've been talking about Global South. Mr. Richard, your thoughts on shifting global balance of power and India emerging as the South, the voice of Global South? Well, certainly there's a lot of competition to try to have that voice right now. China would like to also play a dominant role in trying to determine what the Global South engages in, how they are active against vested interests from times before, including the United States and Europe. So I think when we talk about the empowerment of the Global South, for the United States vantage point, first and foremost, we have a very difficult domestic political situation right now where a lot of Americans fearful of many decades of globalization, of which the United States has at least off and on been a leader of. You actually see a lot of inward looking. We've seen that in multiple elections now. I would say when you look at President Biden's agenda as it relates to international engagement and the places that he's really spending time and money, it really kind of focuses on two major buckets. First and foremost is trying to be more competitive versus some of the dangerous elements of the rise of China. And the second is on climate change. But even on climate change, we have a lot of promises we make. Certainly, we're trying to press other countries to make substantial commitments on climate, but we haven't always been following it up with the money and transfer of technology we've been promising. But outside those two narrow buckets, the United States really doesn't have a lot of areas where we're having dramatic leadership right now. So we think about other areas like on international trade and such, where we've typically been leaders, not really quite so much right now. But it is important, I think, that we do work with critical partners. And apart from the G20 summit, of course, we had a very important bilateral meeting between President Biden and Prime Minister Modi, coming just 2.5 months after the very historic state visit. I think a lot of analysts thought that it might be just a bit of a sidebar, but we actually saw further concrete announcements during that visit. So I think in terms of the United States view on empowering Global South, we're very comfortable and supportive of India's rise. With China, it's mixed. We love what China's rise has done for the impoverished in China, but some of the dangerous elements are very concerning. So I don't think we have an unalloyed view about the rise of the Global South. I think we pick partners that view the world much like we do, and we double down in support for those, and in narrow channels like climate change right now, as well as empowering nations to stand up for themselves against the rise of China. Very important points that you made. I'll take that to Ambassador Goyal. Ambassador Goyal, your thoughts on India emerging as a voice of Global South? As my previous co-panelist said, there are lots of challenges in the process. There are lots of countries. And one of them, of course, is China, which itself is claiming to be the voice of South in various on various platforms. The problem really here is what is actually meant by being the voice of the South. We have known what China did in the past. And I think many of the countries in Africa and the USA and Europe, they all know now, even if they didn't know it about 5 years ago, we all know what China did by being the voice of the South. They created a debt trap in which most of the countries in Asia and South and Africa have come into. And after falling in the debt trap with China, their debt needs to be restructured. And then China, like in the case of Sri Lanka, you know what they did? They wanted to claim a large part of financial inflows coming to Sri Lanka as part of the debt restructuring, claiming their own debt back, further pushing Sri Lanka into another debt trap. So therefore, I think many countries now realize what the problem is, because the sources of financial inflows are limited. And many of the countries,
even in the West, they will actually, because the finances are in the hands of even the private industries or the large development banks who depend upon these governments for contributions. The problem really in all these schemes is where are the finances going to come from? And that is where China comes in. China basically exploits this weakness in all the schemes that we actually lay down. And that is my concern. Precisely the same as Rick said. Because lack of finances coming to these global south would again push them to China, who is coming easy with easy financing, with an intention to collect the debt at a later stage when they cannot pay the debt. Now, my feeling is that unless the countries with the finances or the banking institutions or the large development banks, unless they realize that by playing into the hands of China, they're actually pushing the globe onto the precipice where there will be no solution later on, we have no way out. And what this declaration does is, I think, even if we are not able to find a solution, this declaration has presented a picture of what possibilities are and what could happen unless we wake up now or unless we have a solution now. And that actually goes into the area of climate, that goes into the area of economic growth, that goes into all kinds of areas really, because it is owning up to the responsibility for the larger economies to help or to work with the smaller economies in the benefit of their own economies. And that is what we meant, one earth, one future, one family, etc. I do hope that everybody understands that it is in their future that they're investing by investing in the economies of the small economies. Yes. Absolutely. And of course, we've been talking about the majestic Bharat Mandapam that's there on your screens, viewers. Beyond the diplomatic significance, the venue also offers a platform for India's artisans to showcase their art and craft, reflecting the nation's cultural richness. Bharat Mandapam also derives its root from Lord Bashveshwara's idea of Anubhav Mandapam, which was a pavilion for public ceremonies. We are seeing it's a sprawling campus where Prime Minister Modi, President Draupadi Murmu, they're welcoming our esteemed guests. And of course, we've been seeing the cultural articulation of India, Manoj ji, as we are seeing these visuals. जी जी बिल्कुल लेकिन आज क्या कुछ हुआ इसकी सीधी जानकारी लेने के लिए आपको सीधे लिए चलता हूं अपने सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता के पास। अमरेंद्र जी, क्या जानकारी है घोषणा पत्र को लेकर, क्या कुछ रहा आज, क्योंकि कई तमाम तरह की जो घोषणाएं हुई हैं वो सहमति पत्र के द्वारा उभर के सामने आई हैं, क्या जानकारी आपके पास है? मनोज जी, जैसा मैंने आपको बताया कि महाशक्तियों का महाकुंभ भारत में चल रहा है और उसका नेतृत्व भारत कर रहा है, और भारत की इस शक्ति का आगाज तब हो गया जब पहली बार G20 के समिट में पहली बार जो घोषणा पत्र हुई, पहले दिन ही उस घोषणा पत्र को स्वीकार कर लिया गया, जिसमें दिल्ली के घोषणा पत्र में अगर माने तो 37 पन्नों का ये घोषणा पत्र है, जिसमें लगभग 20 जो मुद्दे हैं उसकी बात की गई है। अगर मैं आपको मुद्दों की बात बताऊं तो इसमें हर मुद्दे को तरजीह दी गई है, चाहे आर्थिक मुद्दा हो, चाहे राजनीतिक मुद्दा हो, या विकासशील देशों के जो समस्याओं से संबंधित जुड़े हुए मुद्दे हो, उनको खासी तरजीह दी गई है। और अगर मैं उन मुद्दों में बात करूं तो सबसे पहले जो विकासशील देश हैं जो G20 के अंतर्गत आते हैं, उनके हर मुद्दे को इसमें एड्रेस करने की बात की गई है। 21वीं सदी के वैश्विक जो चुनौतियां हैं उसको मिलकर हल करने की बात की गई है। इसके अलावा ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं पर जोर दिया गया है। क्रिप्टो करेंसी की जो बात है उस पर एक पॉलिसी बनाने का भी जोर दिया गया है। इसके अलावा वैश्विक समस्याओं के समाधान पर, ग्लोबल लेवल पर जो वैश्विक समस्याएं
हैं उसके समाधान पर फोकस किया गया है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, इंपॉर्टेंट एक चीज़ है कि वर्ल्ड बैंक की क्षमताओं को बढ़ाने की बात की गई है। सभी कंट्री ने एक सुर में इस बात पे अपनी सहमति दी है कि वर्ल्ड बैंक की क्षमताओं को बढ़ाया जाए और जो दूसरे कंट्री को डेब्ट यानी कि उधार दिया जाता है उसके लिए एक पॉलिसी फ्रेम की जाए। इसके अलावा वित्तीय जो संस्थाएं हैं उसको आर्थिक तौर पे और मजबूत करने की बात की गई। तो कुल मिलाकर कहें और एक और बात जो सबसे बड़ी बात है, आतंकवाद के मुद्दे पर जो सेकंड सेशन था उसमें खासा जोर दिया गया है और सभी कंट्री ने उस पर जोर देते हुए उसका विरोध किया है। जिस तरह से चाइना की विस्तारवाद नीति हो या पाकिस्तान की नीति हो, उस पे सभी जो G20 के कंट्री हैं उन्होंने खासा विरोध दर्ज कराते हुए अपनी बात को मुखर रखा है। और मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं लगातार भारत मंडपम से दुनिया के तमाम जो नेता आए हुए हैं न सिर्फ उनकी अगवानी कर रहे हैं बल्कि उनके हर मुद्दे को एड्रेस करने का भी प्रयास कर रहे हैं। और इस वक्त जो माननीय राष्ट्रपति जी का जो डिनर है उसमें मैं आपको बता दूं तकरीबन 170 जो गेस्ट हैं उनकी एक लिस्ट सामने आई है। जो प्रतिनिधि 20 कंट्री के जो G20 के जो प्रतिनिधि हैं उनके अलावा टोटल 170 जो अतिथि हैं जिसमें स्टेट के CMs हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनको इनवाइट किया गया। और अगर आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन पंकज सूद से मैं कहूँगा दिखाएं विजुअल कि इस समय भारत मंडपम में लगातार जो गेस्ट हैं उनके आने का सिलसिला जारी है। जो G20 के जो अतिथि हैं वो लगातार आ रहे हैं और राष्ट्रपति जी उनकी न सिर्फ अगवानी कर रही हैं, प्रधानमंत्री जी भी वहाँ मौजूद हैं और लगातार अतिथि आ रहे हैं। इसमें लगभग हर स्टेट में जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं उनको न्योता दिया गया है। तो लगभग 170 लोगों की लिस्ट इस वक्त है। और इसी रात्रि भोज के बाद मैं आपको बता दूं जिस तरह से इस तरह के समिट होते हैं जो दो कंट्रियों के बीच में जो द्विपक्षीय वार्ता होती है उसको मजबूत करने का एक बड़ा माध्यम होता है। और जिस तरह से पिछले 9 सालों में अगर देखें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर वैश्विक स्तर पर बढ़ती लोकप्रियता का अगर अंदाजा आपको लगाना है तो आपको मैं 30 साल पहले नरेंद्र मोदी जी की उस तस्वीर का एक याद दिलाना चाहूँगा जब व्हाइट हाउस के सामने नरेंद्र मोदी की तस्वीर आई थी, जब उन्होंने अपने कुछ मित्रों के साथ उसको साझा किया था। और आज वो नरेंद्र मोदी जब भारत के सबसे सबल प्रधानमंत्री के तौर पर पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, तब आप देखिए कि किस तरह से व्हाइट हाउस समेत पूरी दुनिया की वो शक्तिशाली लोग, वो शक्तिशाली कंट्री आज भारत में उनके नेतृत्व को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। और एक आज बड़ी उपलब्धि आपको जिस तरह से संयुक्त बयान जारी करके भारत ने अपनी बात को मुखरता से जो और कंट्री उनको स्वीकार कराया है, अपने आप में बड़ी उपलब्धता के तौर पर देखा जा सकता है। इसके अलावा जो द्विपक्षीय वार्ता से जो बातें निकलेंगी वो लंबे समय तक भारत की को विकासशील कंट्री की रेस में शामिल करने के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। इसके अलावा जो कल के सेशंस हैं वो भी खासे अहम माने जा सकते हैं। बिल्कुल अमरेंद्र, आप सुबह से लगातार हमारे पास लाइव अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। भारत मंडपम से आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं। पूरी दुनिया की नजर भारत पे है, G20 समिट पे है, इंडिया की प्रेसिडेंसी पर है। मैं समझना चाहूंगी कि किस तरह से इंटरनेशनल मीडिया का जो अटेंशन है वो कैसा रहा, उनका किस तरह से परसेप्शन रहा। जी अमरेंद्र। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए राजघाट जाएंगे, लेकिन आज अमरेंद्र, आप हमारे साथ सुबह से लगातार बने हुए हैं। आप भारत मंडपम से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लाइव अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं। जैसा कि हम कह रहे हैं कि पूरी दुनिया की नजर भारत में है, तो किस तरह से इंटरनेशनल मीडिया का फोकस रहा आज? I think we've lost the connection there, but moving on in the discussion, Mr. Richard, I'd like to understand that there's consensus on restructuring multilateral development banks for inclusive global growth. Now, these banks include the World Bank Group, the Asian Development Bank, the African Development Bank, and the Inter-American Development Bank, and also other banks. The current framework does not reflect the contemporary realities and aspirations of the developing countries, especially those of the global south. What are the challenges and limitations that affect their relevance and performance in the changing global context? Yeah, it's
I think some of the pressure that they've begun to feel, because of alternative institutions that have been created, India, of course, has been supportive of that, has actually, I think, been more powerful in trying to stoke action, or at least an interest in action from developed countries than would have otherwise taken place just simply through direct negotiations. So I think India's strategy of engaging in functional entities like BRICS and the Asian Infrastructure Investment Bank have actually stoked some activity. But the challenges, here remain as ones that we've spoken about before already. For the United States, when we think about reformation and restoration of these organizations, it's going to take additional infusions of capital. And right now, there's less appetite, I think, among American voters to spend a lot of money in empowering other nations when there's still the need or the felt need to redevelop a lot of parts of the United States that may have left behind somewhat of globalization. But also, there's going to be a lot of wrestling, I think, in terms of which countries would actually achieve greater power and authority in these organizations. India strives to do so, and I think the United States would be a strong supporter of that. But other countries like China and maybe some like Turkey and others, where we've got a bit more of a mixed reaction, I think, so far in terms of where the countries are going to right now, domestically, politically, some of their own international relationships. So I think a statement like this is important. It certainly sets in paper the intention. I think when we speak directly between the United States and India, there's a shared understanding. We'd like to see India's prioritization and elevation of these platforms. But there are a lot of fights that are going to happen behind the scenes because we're not all going to agree on which countries need to have a stronger voice when we talk about the global South. Again, those that I think share our views and share our goals for global security are going to be good partners, and we're going to support those that may have differing views about what the global architecture should look like. That's going to be where the tough battles take place. So a statement's great, but a lot more sweat and action have to happen after the fact. Yeah. Absolutely. And also, Ambassador Goyal, since we're talking about these multilateral development banks, and of course, one of the issues that many countries have always voiced, that the current structure does not ensure transparency and disclosure of the operations and the impact. Your thoughts, sir? We come back to the same way of thinking and operating really in the international financial architecture. I'm saying that with a bit of thought, really. You see, in the ideal world, transparency is absolutely fantastic. Transparent way of transferring funds, transparent way of really the financial decision making are absolutely necessary. The problem really here is when the decision making, even in the international financial institution, is so opaque and guided by their own political imperatives. Please do remember that the board of each of these IFIs, with IMF and World Bank, is controlled by the countries which contribute the maximum to the capital. And therefore, they have also the majority vote in the decision making. And their vote, obviously, is quite clear, and they will be concerned about how the funds are being spent in certain countries which claim to be democratic, but their way of functioning is entirely different from the understanding of the majority stakeholders. So when that happens, there's a huge gap between what is ideal and how it operates on ground. Therefore, unless, and I'm coming back to the same thing, we need to look at the long-term goal. And the long-term goal is it will be met not by focusing financial empowerment into hands of few, but a larger dispersion of the financial decision making. Similarly, the transparency and democracy in the decision making in financial areas, in the economic transfer areas, in trade flows, will be done not by basically, again, going by interest of the few. I know that I sound basically the same old mode, but the truth is that the problems begin when aspirations of people are not met. And the aspirations of people are not met
when they cannot engage in trade and economic activities at a desirable level. I know because I've grown up through 70s. In जी 70s, when the lack of resources limited the activities within India itself, and therefore led us further to a controlled economy. We know the problems created by that kind of a vicious circle. In 1991, we took a risk. We allowed the economy to grow, even though there were full chances that there will be a capital outflow from India. But we took a risk. Fortunately, we came out of it. But there are countries where the financial outflows could pose a major problem. And therefore, again, I'm coming back to the same thing. I think this is one common world where we're living together. And we need to take responsibility together for where it goes. Priti. जी बिल्कुल Right, sir. संजीव कुमार जी, अगर बात हम मानवता केंद्रित विकास की करें, जिस पे खासा जोर इस डिक्लेरेशन में दिया गया है और प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में भी कई बार इसका उल्लेख किया है, इस पहलू को आप कैसे देखते हैं? साथ ही अगर मैं कहूं तो दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी जो है वो डिजिटल सुविधा से वंचित है। डिजिटल टेक्नोलॉजी के जरिए भारत ने जो कल्याणकारी रास्ता अपनाया है उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि इस शिखर सम्मेलन के जरिए भारत ने दुनिया को यह भी बताया है कि किस तरह से डिजिटल की जरिए, डिजिटल टेक्नोलॉजी के जरिए जन कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा सकता है। इस पहलू को आप कैसे देखते हैं? मानव केंद्रित विकास ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। प्रधानमंत्री ने अपने लेख में भी इसका जिक्र किया था और उन्होंने खास तौर पे लिखा था कि यह एक जीडीपी लेड ग्रोथ से मानव केंद्रित ग्रोथ, जिसे ह्यूमन सेंट्रिक ग्रोथ की तरफ शिफ्ट है। और मुझे लगता है इस पूरे डॉक्यूमेंट में यह सबसे महत्वपूर्ण या एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जो कि सारे देशों ने इसको एक्सेप्ट किया है। इसका मतलब ये हुआ कि जीडीपी ही विकास का एकमात्र सूचक नहीं है और हमें ह्यूमन सेंट्रिक ग्रोथ पे ध्यान देना होगा। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत का कल्चर जो है वो इतिहास में इस विकास को बढ़ावा दिया है और इस विकास के द्वारा इसको अगर हम आज के संदर्भ में समझें तो मार्केट या बाजार ही सब कुछ तय नहीं करेगा। प्रधानमंत्री ने यह जोर देकर कहा है कि इस कल्याणकारी योजनाएं खास लोगों के लिए, गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, महिलाओं के लिए, अन्य वर्गों के लिए बनाई जाएगी क्योंकि बाजार इन सब समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता जी। और इसीलिए ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट का जो कॉल प्रधानमंत्री ने लिया है और इस G20 सम्मेलन ने में सारे देशों ने इसको स्वीकार किया है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और इससे विकास की दिशा तय होगी भविष्य में और मुझे लगता है कि ये ज्यादा जस्टिस की तरफ लोगों को ले जाएगा, समाज को ले जाएगा और ज्यादा समता मूलक समाज की तरफ ले जाएगा। जी बिल्कुल। दूसरा मुद्दा जो आपने उठाया वो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की, मैंने कहा कि इस डॉक्यूमेंट में G20 के देशों ने भारत द्वारा प्रस्तावित फ्रेमवर्क को या डिफिनीशन को, क्योंकि इसके पहले इसका आप फ्रेमवर्क नहीं पाएंगे और क्या क्या संरचनाओं की जरूरत है उन सब को स्वीकार किया। इसमें ह्यूमन राइट की भी बात की गई है, पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन की भी बात की गई है और जैसा कि हम जानते हैं भारत में बहुत सारे पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर्स बहुत सही साबित हुए हैं और ये सारे बाकी देशों में भी सही साबित हो सकते हैं। भारत ने ये प्रस्तावना भी किया है, खासकर ग्लोबल साउथ के देशों में इसकी अपार संभावनाएं। धन्यवाद जी। बिल्कुल सुरेश गोयल जी, एक सवाल मेरा आपसे है क्योंकि दिल्ली डिक्लेरेशन एक महत्वपूर्ण दस्तावेज उभर के सामने आया। जाहिर सी बात है G20 की बैठक पहले भी हुई है लेकिन इतने सारे मुद्दों पर दुनिया के संपन्न देश सहमति के साथ किसी डिक्लेरेशन को अपनाए, स्वीकार करें, यह अपने में एक ऐतिहासिक क्षण है। आप वो पहलू कौन से देखते हैं जिसके चलते ये दिल्ली डिक्लेरेशन जो है वो खासा महत्वपूर्ण है? देखिए, जहां तक मेरे को उम्मीद थी कि ज्यादातर इकोनॉमिक एरियाज में सहमति रहेगी देशों में, क्योंकि इससे पहले जब
प्रधानमंत्री मोदी बाहर गए या हमारे ऑफिशियल्स ने बात करी, तो एक तरह से सामने आ रहा था कि जहां तक इकोनॉमिक और ग्रोथ वाला पार्ट है, उसमें सारे देशों में सहमति बनेगी। खास तौर पर जब ये पता लगा कि चीन नहीं आ रहा है और चीन जो है उसमें उनका जो रोल है या जो उनकी इंक्लिनेशन है कि वो सहमति नहीं करेंगे, उसकी एक आशा उसकी या मतलब की पॉसिबिलिटी कम हो गई थी। मेरे को खाली ये लग रहा था कि यूक्रेन के ऊपर शायद सहमति नहीं बन पाए, लेकिन क्लेवर ड्राफ्टिंग के थ्रू ये भी पॉसिबल हो पाया है। ये मैं फिर एक वो खोटे सिक्के की तरह वापस आऊंगा। देखिए, दिक्कत ये है कि डिक्लेरेशंस, रेजोल्यूशंस, स्टेटमेंट्स ये बन जाती है, ये आ गई है, सामने है। और मेरे ख्याल है इसमें जो है ज्यादातर जो रोल है कि जो विश्व के बाकी देश है उनका भारत के प्रति सम्मान, प्रधानमंत्री मोदी के प्रति सम्मान कि हमें G20 में यहाँ से खाली हाथ नहीं जाना है। मैं ये कहूंगा कि हमारा और मेरे ये होगा भी कि ये एक डिक्लेरेशन में सहमत होने के बाद अगर हमारे यहाँ डिनर पर, राष्ट्रपति के डिनर पर अगर वो खाली सॉफ्ट ड्रिंक के अलावा कुछ और भी देती तो शायद मेरे ख्याल बड़ा सेलिब्रेटरी मूड बनता भी। अभी भी सेलिब्रेटरी मूड होगा, लेकिन इस सेलिब्रेटरी मूड को आगे कायम रखने के लिए जरूरी ये है कि इस डिक्लेरेशन का एक इम्प्लीमेंटेशन प्लान बनना है। जो इम्प्लीमेंटेशन प्लान बने उसमें प्रायोरिटाइज करके कि किस चीज को कब तक करना है, सारी सरकारों में ये होता है। और इसका एक इम्प्लीमेंटेशन प्लान, एक्शन प्लान बनाना जरूरी है, वरना ये भी एक दस्तावेजी की तरह रखा रह जाएगा। ये तो सबसे जरूरी मैं ये कहूंगा, और प्रधानमंत्री मोदी कर भी सकते हैं, कि एक इम्प्लीमेंटेशन कमेटी हो सभी सरकारों में और बजाय इसकी मॉनिटरिंग हो इसकी बाकायदा कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रही है। Absolutely, absolutely, sir. So those are very important aspects, implementation and monitoring. But Mr. Richard, India's G20 presidency has been the most ambitious in history. With 112 outcomes and presidency documents, India has more than doubled the substantive work from previous presidencies. Look at the data. Indonesia, 2022, 50 outcomes. Italy, 2021, 65 outcomes. Saudi Arabia, 2020, 30 outcomes. So do you think Delhi Declaration and the documents that we've adopted today, and of course there's agreement on that, do you think it is path-breaking? It is, but at the same time, it also means that the agenda starts to get a little bit more diluted over time. Every leader that takes over the G20 wants to continue what was done before and add on to it. So I suspect that you'll see, continued expansion over time. If you look at a lot of the outcomes the G20 notes, they constantly refer to actually other organizations that are actually going to be the key implementers, right? So when we talk about global health cooperation, they reiterate the fact that the WHO is really the leader in that work stream, or on trade and economic integration, the WTO, the UN, FCC on climate change, et cetera. The G20, frankly, the fact that you may not have had more concrete outcomes and actionable points for the countries to act on is actually kind of a good thing in some ways too under India's leadership, because it actually underscores the fact that we haven't had worsening crises around the world. That really is kind of what the G20 was purpose-built for. So we've had a relatively stable year in terms of COVID, no dramatic new variants that, that increased mortality rates dramatically around the country. We had a minor banking crisis here in the United States in the spring, which didn't really bleed across borders, with the exception of one bank in Europe that hit some troubled waters. Even some of the instability we saw initially after Russia's invasion of Ukraine in global energy and food prices have moderated and stabilized somewhat over the last year. So a widening agenda, not as much that's going to trigger precise concrete action by countries, but that's a good thing, because it generally means that we kind of avoided some major crisis where the G20 at the leaders level would have to impress serious action among all the member states there. So the agenda is wide. There's a lot of great things there. The action will be undertaken by other groups, but it's not going to trigger a lot of changes in home countries because luckily India's avoided some of the strains we've seen in past presidencies. Of course, the areas of strength that we're talking about, digital India emerging as the digital powerhouse. Mr. Richard, it is serendipitous that there's consensus during India's G20 presidency
on leveraging digital technology for societal development and exploring the potential of new technology for common good. India topped the list for digital payments and recorded 89.5 million transactions in 2022. Look at our Jam Trinity for common good. Do you think India's digital public infrastructure offers scalable, secure, and inclusive solutions for global challenges? It does. There again, you know, it's as with many things in the world, it's not without some level of contention, because some of what the Indian government has built to underpin this are areas where private firms in most other countries typically take the lead. But I think India saw that they weren't coming in, they weren't delivering solutions for payments and integration at a price point that the vast majority of Indians could achieve and exceed to. And so I think we're going to have to watch this over time as well. India has a very different model than most Western countries and even most other developing countries have utilized. It has triggered low-cost, dramatic expansion for financial inclusion for sure. But as we've seen with other entities that the government has built and controlled, Air India, MTNL, VSNL, so many throughout time and history, can they maintain a level of momentum and modernizing and refreshing? Otherwise, if it becomes stagnant, then suddenly you're going to have a government entity in the Jam Trinity that's crowded out private firms and may actually be difficult to update and modernize as new types of digital payment tools and such become valid in the future. So great out of the gates, very different than the model that I think other countries have employed. And there is, I know, a little bit of tension because of that underneath the radar screen. But we'll see long term. You know, hasn't been always the best before when the government has controlled, you know, parts of the economy that really underpin key parts of India's economy. But, you know, I think hopefully they've learned some lessons. We'll see if this can continue and deliver these incredible low-cost services that really have allowed for financial inclusion in India to scale that other developing countries haven't seen. Absolutely. जी बिल्कुल संजीव कुमार जी, एक मुद्दा है भारत मिडिल ईस्ट यूरोप कनेक्टिविटी का, जिसको एक शुरुआत की गई है। आप इसको कैसे देखते हैं? ये क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, ये साइडलाइंस में जो एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, किसी भी मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस के साइडलाइंस में बहुत सारे बायलैटरल और अदर एंगेजमेंट होते हैं, उसमें ये चर्चा हुई है और इसे एक मैं बहुत ही महत्वपूर्ण इनिशिएटिव मानता हूं, जो कि भारत मिडिल ईस्ट और यूरोप से कनेक्टिविटी के लिए महत्वपूर्ण होगा। लेकिन इसके डिटेल्स अभी आने बाकी हैं और मुझे लगता है डिटेल्स आने पे इसको ज्यादा अच्छी तरह इसका आकलन किया जा सकता है। Absolutely. Let's also talk about another very important aspect. Ambassador Goyal, India has already launched the Green Grids initiative, One Sun, One Word, One Grid. Prime Minister Modi announced the launch of Global Biofuel Alliance. Take us through the importance of Biofuel Alliance, keeping in mind the principles of climate security. I think just like the Solar Alliance, the biofuels, etc., they lead us in the same direction in terms of clean earth, clean energy, sustainable economy, sustainable target, and all that. I always say one thing, that basically the usefulness or the outcome of any initiative, laudable, very, very good, just like the Solar Alliance, lies in its really implementation. Right, therefore, sir, I would say at this stage, only if this alliance can work really honestly, if I can use that word, because very often what happens is that the economics takes over, the temporary transient economics, and they find that the fossil fuels are more economic to use for the time being, just like you know the debate between the nuclear energy and the fossil fuels and the solar and the wind. There has been debate for a long time, and today, in fact, if there is a debate favoring the nuclear energy, it's the economics really. Therefore, in terms of the biofuel grid or the biofuel alliance, I think we need to work, even if we find that the economics doesn't work in its favor to begin with. We need to take a long-term view, just like we have done that in the case of the Solar Alliance, where the production may not be economic to begin with, but we are looking at the climate change and
how it actually might benefit people in the long run. It's a very, very good initiative if we can keep our long-term view on the project. That's all I can say, really. Absolutely, sir. You've been underlining the importance of implementation and monitoring, of course. But talking about another important aspect, Mr. Richard, with its strategic growth trajectory and support from the government and private sector, India's space economy could reach $40 billion by 2040. The world is familiar with the success of India's moon mission, which is Chandrayaan. The data obtained from it will be beneficial for entire humanity. With the same spirit, India proposed the launch of G20 satellite mission for environment and climate observation. What does it mean for the global space economy? It's an important step. There still are, I don't think you face this quite as much in India, but in the United States and a lot of other countries, still a lot of skepticism about how real the impacts of climate change are. And that has stymied some of the major initiatives that countries have attempted to do in the recent past. So I think the international community coming together, further improving and augmenting data that highlights some of the direct impacts that we see, the accelerating impacts of climate change, is going to be useful and helpful. Sending things to the moon, it's not just about the observations you make on the moon. Of course, all the scientific developments that go into developing rockets and fuels and the technologies that go into it have a lot of application, back here on Earth. But with space, they talk about harnessing minerals that you might find in space. Of course, we've got, with the increase in satellites right now, internet linkages for people and places that otherwise wouldn't have had it before. So it actually has compounding effects across multiple domains when we really apply scientific research in areas which you may not always see the returns right away, but over long term, it can achieve dramatic, substantial benefits. But this one in particular, as we all use our resources and educate our publics a bit more on the accelerating impacts of climate change, is going to be important because we're still falling short, I think, of our goals in decarbonizing to be able to meet the 1.5 and 2 degree temperature change targets. So important on many fronts, I'd say, and I'm glad to see the action under the G20. India is kind of a natural leader with the recent successes. जी Absolutely. बिल्कुल। सुरेश गोयल जी, अगला सवाल मेरा आपसे है, खासतौर से अफ्रीकी यूनियंस की बात मैं जरूर आपसे करूंगा, क्योंकि ये मुद्दा इस शिखर सम्मेलन के एक तरह से केंद्र में रहा और इसका अगुवा एक तरह से भारत रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ समय पहले पत्र लिखकर जो अफ्रीकी यूनियंस है उनको शामिल करने की भी बात कही थी, ये मुद्दा उठाया था और आखिरकार G20 के देशों में इस बात को लेकर सहमति बनी और आने वाले दिनों में G20 का नाम शायद G21 हो जाएगा। जाहिर तौर पे एक विस्तार हुआ है और उसकी पहल भारत ने की है। अफ्रीकी यूनियंस का G20 में शामिल होना क्यों इंपॉर्टेंट है, खासतौर से आर्थिक लिहाज से, विकास के लिहाज से? देखिए, G20 का मेरे को मालूम याद आ रहा है कि जब ये 2009 में फाइनेंशियल क्राइसिस शुरू हुआ था और काफी लोगों की नौकरियां गई थी, काफी लोगों का काम गया था, तो उस समय ये सबको जाहिर था कि अगर हमें विश्व की आर्थिक व्यवस्था को दोबारा से रेस्टोर करना है तो ये जरूरी है कि एक जो बैलेंस होना चाहिए इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस वगैरह सब में, ये एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है कि सब मिलकर के काम करेंगी। उसमें अगर हम उस टाइम पर जब G20 बना तो ये सबको मालूम था कि जब तक इसमें डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज और बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्था इकट्ठा आके काम नहीं करेंगी तो ये जो सपना है कि आगे ऐसी स्थिति पैदा नहीं हो, वो पूरी नहीं हो सकती है। ये अब अगर हम देखें G20 अभी संसार का मेजर सबसे बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक ग्रोथ वाला प्लेटफॉर्म है ये। अब अगर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की हम बात करते हैं और उस वाले प्लेटफॉर्म पर अफ्रीकन कंट्रीज नहीं हो या पूरा अफ्रीकन, जैसे कि यूरोपियन यूनियन है। अब यूरोपियन यूनियन क्यों है वहां पर? ये क्योंकि मेजर डेवलप्ड इकोनॉमीज, आप फ्रांस, जर्मनी, यूके को छोड़ करके वो सारे इसमें भी हैं और यूरोपियन यूनियन मेजर डोनर कंट्री है ये। इसी तरह से मेजर डेवलपिंग ब्लॉक वो अफ्रीका का है ये। तो अगर अफ्रीकन यूनियन की कंट्रीज इसमें नहीं होंगी तो खाली यही नहीं कि कुछ मिसिंग है, ये भी है कि जो इसका एस्पिरेशन है G20 का
वो पूरा नहीं हो सकता है ये। तो मेरा ख्याल है ये एक बहुत अच्छा कदम है, ये होना चाहिए था, ये बहुत पहले होना चाहिए था। जी और ये अच्छा है कि अभी प्रधानमंत्री मोदी ने कदम उठाया, भारत ने कदम उठाया, और अब जो है अफ्रीका यूनियन G20 का हिस्सा है ये। जी और उसका आ, एक जी बिल्कुल, और जी उसका एक सकारात्मक संदेश जो भारत जिस परिवार की बात भारत कर रहा है, जिस वसुधैव कुटुंब की भारत बात कर रहा है, जिस पे लगातार जोर दे रहा था, वो अवधारणा कहीं ना कहीं भारत बिल्कुल। करके भी दिखा रहा है, आ, और उस अवधारणा को, वसुधैव कुटुंब की अवधारणा को दुनिया स्वीकार भी कर रही है। आप मैं तीनों एक चीज और कहना जी चाहता हूँ, जी जरा माफ कीजिएगा, क्योंकि खतरा ये है कि यहाँ पर जैसा कि पहले भी हुआ है कि एक अच्छा काम हुआ और वहां पर एक जो एक मानसिक अवस्था है चीन की कि उससे मेरे को क्या फायदा होना है ये, और उस मानसिक अवस्था ने एक फिर खतरा पैदा कर दिया, जैसे कि श्रीलंका में हुआ, पाकिस्तान में हो रहा है ये। हमें इस चीज से सावधान रहना है कि इस चीज को चीन नाजायज फायदा ना उठाए। जी। जी बिल्कुल। फिलहाल समय एक ब्रेक का है, आप देखते रहिए सनसेट टीवी। हाँ, नमस्कार, मुझे जाना होगा। जब अगर आपके पास ताकत होती है तो जिम्मेदारियां और ज़्यादा बढ़ जाती हैं, अपेक्षाएं लोगों की बढ़ जाती हैं। कितनी अपेक्षा दुनिया की इस वक्त भारत से? देखिए, जिस प्रकार से G20 की अध्यक्षता भारत ने की है जी। अब तक, मैं तो कहूँगा न भूतो न भविष्य, किसी भी राष्ट्र ने अब तक इस तरह से अध्यक्षता शायद ना की हो। 200 से ज़्यादा मीटिंग हुई हैं, तकरीबन 55, 56, 60 देश शहरों के अंदर, जगहों के ऊपर ये अलग अलग विषय के ऊपर मीटिंग हुई है। पूर्व से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूरे भारत को दिखाने का काम। और इसमें मैं कहूँगा कि मोदी जी की एक खासियत है, हमेशा राष्ट्र के रूप में सोचते हैं और हमेशा बहुत आगे की सोचते हैं। किसी भी देश के अंदर जब भी अध्यक्षता हुई है, वहाँ पे आप 1 या 2 जगह पर सीमित रहे। चीन ने मेरे ख्याल से 4 जगह किया, हमने क्यों तकरीबन 60 जगहों पर किया। भारत की अगर विविधता, संस्कृति और भारत को जानने के लिए अगर कोशिश करनी है तो इससे बढ़िया मौका नहीं था। जब कोई भी राष्ट्राध्यक्ष जब आते हैं, जैसे कि शिखर सम्मेलन में ही जो राष्ट्राध्यक्ष जो आए, उसके तुरंत बाद अगर देश के प्रधानमंत्री बायलैटरल टॉक कर रहे हैं, द्विपक्षीय वार्ता कुछ लोगों के साथ कर रहे हैं, तो G20 में तो जो बातचीत होती है वो होती ही है, लेकिन जो द्विपक्षीय वार्ता होती है, ऐसी कौन सी बात उस द्विपक्षीय वार्ता में होती है जो करना बहुत ज़रूरी होता है? इसका क्या मतलब होता है? देखिए, जो भी विश्व के अंदर अलग अलग जो ग्रुपिंग्स हैं, उनकी जो मीटिंग्स होती हैं जी। उनके अंदर साइडलाइंस के ऊपर कोई भी देश द्विपक्षीय वार्ता की बात करता है। कई बार क्या होता है कि एजेंडा मीटिंग का फिक्स है, जी। G20 का एजेंडा फिक्स है, जी। वन वर्ल्ड, वन फैमिली, सब चीज़ें फिक्स हैं, उसके अंदर ये चीज़ डिस्कस होंगी, वो आप डिस्कस कर रहे हैं। उसके अलावा कई देश सोच कर आते हैं कि हमें बात करनी है, इन 2-3 चीज़ों के ऊपर और बात करनी है, इसलिए द्विपक्षीय बात होती है।
उसके अंदर आपस की चीज़ें के ऊपर बात होती है। G20 से उसका लेना हो या ना देना हो, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसे मुद्दे उठते हैं जो शायद क्लैरिटी के लिए चाहिए, और जब राष्ट्राध्यक्ष बैठे हैं तो उनके लिए एक और बड़ी चीज़ हो जाती है कि 1 to 1 उन चीज़ों के ऊपर भी बात कर ली जाए जिनके बारे में शायद पहले उन्होंने बात की हो या पहले कभी उठी। हम बात करने जा रहे हैं डेनमार्क की पत्रकार सोनिया से। सोनिया यहाँ पर G20 को कवर करने के लिए आए हैं। सोनिया, you are covering G20 in India. So how is your experience being here? It's a very good experience. It's amazing to meet Indian people and to hear about Indian history and to cover the summit and hear about what everything's going on with India and how it's growing. It's really amazing. And I've been around the city to talk to people and to hear what their expectations are for G20. And it seems like all Indians are quite proud of G20 and I really admire that. Okay, tell me some food you have tasted. Some Indian food? Yes, I had this the flat rice cake, the round one you have, ildi with coconut. That was really good. I like that a lot. I'm a sucker for South Indian food, so dosa and all that. I love that. There's a really good place in Delhi called Jagannath. So now that's recommendation is out there. Okay, and you are wearing a very good Indian attire, I can see. And do you like Indian attire, and what do you like about that? Actually, I didn't know about this design before, but I just saw it and I thought I really liked the colors and the design of it. I really like this blue dark color. I think that's very stylish and beautiful. It's actually kind of matching your sari. So I like that a lot. थैंक यू सो मच सोनिया टू कनेक्ट विद अस। तो आप सुन रहे थे सोनिया को, जो डेनमार्क की पत्रकार हैं, जो भारतीय संस्कृति, भारतीय खान पान और भारतीय परिधानों से बहुत प्रभावित नजर आए। कैमरामैन कंवलजीत रेखी के साथ मैं शालिनी, संसद टीवी।